Dear students, today my topic is chemical changes, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज आप पढ़ेंगे तो आपको नई नई जानकारियाँ होंगी। इससे पहले आपने जो पढ़ा था फिजिकल चेंजेस, उसमें ये बताया गया था दीज चेंजेस आर टेम्परेरी, मगर यहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन है यानी केमिकल चेंजेस हैं ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। एक बार चेंज होने के बाद वो चीज़ वापस नहीं आती है। जिस तरह से दूध से दही का बनना, दूध से दही तो बन जाएगी मगर दही से फिर दूध नहीं बन सकता है। तो ये परिवर्तन कैसे हैं? जिस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। केमिकल चेंजेस, दो चेंजेस in which one or more new substances are formed are called chemical changes. These changes are permanent changes, यानी कि ये परिवर्तन होने के बाद दोबारा उस स्थिति में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, burning of any substance, burning of any substance such as magnesium, मैग्नीशियम, कोल, वुड, पेपर, कैंडल, LPG, ETC। ये बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। इसी तरह से कुकिंग ऑफ फूड, cooking of food, digestion of food, growth of a child, or प्लांट। यानी बच्चे की ग्रोथ या प्लांट की ग्रोथ जो है ये भी एक केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फ्रॉम milk, rusting of iron,
of iron formation of water from reaction of from H2 and O2, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन से जो वाटर बनता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ आयरन, नेक्स्ट एग्जाम्पल formation of iron sulfide from iron films, from iron films and sulfur production of hydrogen of production of hydrogen by the action of an acid on iron films. These are example of chemical changes. And last example, turning of lime water milky in open air. etc. So these are the examples of chemical changes, and again I repeat, definition of chemical changes: those changes in which one or more new substance are formed are called chemical changes. And chemical changes are permanent. Thank you. Take care.